Students, yesterday we discussed about compressibility factor. So I think सबको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए. So it is about V real by V ideal का ratio. So V ideal को हम लोग लिख सकते हैं nRT by P. So that will become PV by nRT. So Z, that is compressibility factor, will be equal to PV by nRT. Now students, first case is when V real is equal to V ideal. ने तीनों केसेस भी डिस्कस किया था कल कि अगर दोनों सेम होते हैं तो वी से दैट रियल गैस इज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस. बराबर. इफ वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल वेयर z इज ग्रेटर देन 1, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट हो रहे हैं रियल गैसेस में. अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो रहे हैं ना. Then we also learned the third case which says that real is less than V ideal, which means यहाँ पर attractive forces dominate हो रहे हैं. Right? तो तीनों cases पढ़ा था हमने. And then we said that we can link the van der Waals real gas equation with the compressibility factor. So if we take this as a compressibility factor versus the pressure, okay? तो आप देख सकते हो कल हमने ड्रॉ किया था that z is equal to 1 रहेगा. In case if z is equal to 1, then for different gases we saw this aspect that for hydrogen and helium ये हमेशा ही z is equal to 1 के ऊपर रहता है और उसके नीचे होता है सारे गैसेस N2, O2, CH4, CO2, ये सारे गैसेस नीचे होते हैं. उसके बाद हमने ये भी लर्न किया था कि वी कैन डिवाइड दिस इनटू 3 डिफरेंट जोन्स बेटा. एक होता है वेरी लो प्रेशर वाला जोन, एक है मॉडरेट प्रेशर वाला जोन एंड द लास्ट वन बीइंग हाई प्रेशर जोन. एंड एट वेरी लो प्रेशर जोन वी हैव लर्न कि ये जो वैन डर वाल इक्वेशन होता है रियल गैस इक्वेशन, उसमें ये दोनों ही इग्नोरेंट फैक्टर्स है, दैट इज प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन. सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आ जाएगा एंड जेड इज इक्वल टू पीवी बाय एनआरटी होता है तो जेड वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. इतना हमने लर्न किया. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट. नेक्स्ट वी ऑल्सो लर्न कि मॉडरेट टेम्परेचर पे क्या फैक्टर्स ऑपरेट होते हैं. एट मॉडरेट टेम्परेचर यू सी दैट द वॉल्यूम फैक्टर कैन बी इग्नोर्ड. सो इट इज ओनली द प्रेशर फैक्टर व्हिच मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. सो प्रेशर फैक्टर को वैसे ही रहने देंगे, वॉल्यूम फैक्टर को हम लोग इग्नोर करेंगे. सो देयरफॉर ये वॉल्यूम का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वी विल गेट पीवी बाय एन आर टी, राइट, प्लस ए एन बाय आर टी वी इज इक्वल टू 1. So PV by nRT हो जाएगा Z and Z is equal to 1 minus AN by RTV. And because ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज है, Z का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, so Z is less than 1. This is the next aspect we learn. The third case we learned is high pressure case. High pressure में आप ये फैक्टर इग्नोर कर सकते हो, that is a pressure correction factor. So pressure correction factor if you ignore, so P into V minus NB is equal to nRT and divide that by nRT. So we will get Z is equal to 1 plus PV by RT. And because ये सारे positive values है, Z will be greater than 1. इतना हमने learn किया कल. Not just that, we also learned that for hydrogen and helium type of gases, है ना, we know that ये हमेशा Z के ऊपर होता है, Z is equal to 1 के ऊपर होता है. So which means Z is always greater than 1 for hydrogen and helium at all the pressures. At all pressures that will be greater than 1. Therefore we can say for all pressures Z would be equal to 1 plus PB by RT. That is for hydrogen and helium, Z value will always be 1 plus PB by RT. Okay, clear? I guess all of you understood this point. Next, we also learned critical parameters. I introduce you to a term called critical parameters. Critical parameters तीन होते हैं: critical pressure, critical volume and critical temperature. So we start with critical temperature. A temperature above which you cannot make a gas to get liquefied. चाहे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, उसको लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते. That is called critical temperature. Or we can also read that as a temperature below which gas can be compressed to form liquid. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. कल भी मैंने ये दिखाया था, आइसोटॉर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड.
तो आप देखोगे कि व्हेन वी प्लॉट द आइसोथर्म्स, ये जो ग्राफ्स होते हैं, राइट, दे आर मोस्टली लाइक आइडियल गैस इक्वेशन एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा है तो हमेशा हमको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट कैसे हो रहा है, ऑल ऑफ दिस आर showing ideal gas behavior. So carbon dioxide is showing ideal gas behavior at high temperature. लो टेम्परेचर में आते आते देखो उसका पूरा डेफिनेशन ही चेंज हो जाता है, वो ऐसा कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है ना बेटा, इसको कहते हैं हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर, करेक्ट। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड क्रिटिकल टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्रीज होता है, मतलब 30 डिग्रीज के अबव कार्बन डाइऑक्साइड को आप कंप्रेस करोगे तो लिक्विड में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, बट 30 डिग्रीज के बिलो अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। हमने लर्न किया कि ये पूरा जोन है ना ऊपर वाला, ये पूरा गैसियस जोन है। जो गैसियस जोन ऐसा है कि देखो आप कितना भी उसको कंप्रेस करो, ऐसे कंप्रेस करते जो सर ऊपर वो जा रहा है, आइडियल जोन है ना? आइडियल गैस जोन है बेटा, गैसियस जोन एज इन आइडियल गैस जोन, ठीक है। सो हियर एट दिस टेम्परेचर आप देखो कितना भी चाहे उसको कंप्रेस करो, ऊपर जा रहे लेकिन वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, अभी भी वो गैस बिहेवियर ही शो करते रहे, ठीक है। कितना भी कंप्रेस करो, मतलब कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, ओके। बट इसके नीचे देखो बेटा, इसके नीचे ये जो जोन होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे वाला जोन, इसको कहते हैं हम लोग वेपर जोन। सो वेपर जोन में क्या हो रहा है, एज यू स्टार्ट कंप्रेसिंग, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो तो एक पॉइंट के बाद फट से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वॉल्यूम ऐसा सोचो, यहाँ पर गैस है और मैं उसको कंप्रेस करते जा रहा हूँ, कंप्रेस करते और एकदम से कंप्रेस होके एक ड्रॉपलेट बन गया, लिक्विड का ड्रॉपलेट बन गया, ओके। तभी तो वॉल्यूम बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज तभी होता है तब कोई गैस डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस तरह का गैस का जो फेज है ना, उसको कहते हैं वेपर। वेपर इज अ फेज ऑफ ए गैस which can be converted into liquid only by application of pressure. So आप सिर्फ प्रेशर अप्लाई करो तो इमीडिएटली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यू कुड ऑब्जर्व दैट कि ये टेम्परेचर 5 में देखो यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया, फट से ये वॉल्यूम कम हो चुका है, मतलब ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इसका प्रूफ क्या है, देखो यहाँ पे इस पॉइंट से आप चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा ना, वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब इट इज लाइक दिस, अब ये ग्लास, ये पानी है, अगर कंप्लीट पानी है, अब मैं उसको कितना भी कंप्रेस करूंगा, इसमें पूरा पानी रख दूंगा अगर, और उसको मैं कितना भी कंप्रेस करूंगा, राइट, तो आप उसको छोटा वॉल्यूम में नहीं ला सकते ना, क्योंकि लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो देयरफॉर वी कैन से ये पूरा जो जोन जो है ना, दिस इज ऑल लिक्विड जोन, this is all liquid zone, this is all vapor zone, this is all gas zone which is behaving ideally। और ये जो डोम के अंदर है ना, ये जो डोम के अंदर, ये लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम जोन है। अगर थोड़ा लेफ्ट को शिफ्ट करोगे तो लिक्विड, राइट को शिफ्ट करोगे तो वेपर, क्लियर। तो इसको कहेंगे हम लोग वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम जोन। एंड क्रिटिकल टेम्परेचर कर्व पे जहां पर थोड़ा सा चेंज आता है यहाँ पर, उसको कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और उसका 1 mole of, if you take 1 mole of that gas, the volume occupied is called as critical volume. This also we have learned the other day, like the spray. Spray case is different बेटा, देखो अभिषेक, this is that zone, उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला वो स्प्रे वाला जोन है, कल जो मैं बात कर रहा था, ये वाला जोन जो हाई प्रेशर पे है, ठीक है, और उसको आप लिक्विड या गैस में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, और हमने क्या बोला इस वर्ड को, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। दिस इज अ जोन व्हिच इज लाइक अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, क्लियर। यस सर। So I think all of you understood that. Next what we discussed was the various formulas. सर Okay. या बेटा चल, वो डोम शेप में फिर उसे एग्जांपल उसका। क्या बेटा,
Say it again. सर जो डोम शेप के अंदर है उसका एग्जांपल। ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। ये डोम के अंदर जो होता है ना, ये हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ऐसा हर गैस के लिए एक डोम बनता है। ठीक है, सो इफ यू टेक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी आप गैस लो, उसका एक डोम बन जाता है। ठीक है, ओके सर, क्लियर। नाउ लुक एट दिस। Yesterday we also learned the formula for PC, VC and TC. So VC का फॉर्मूला था 3B, PC का फॉर्मूला है A by 27B square, TC का फॉर्मूला है 8A by 27RB, राइट? सो व्हाट वी लर्न कि कोई भी गैस का अगर हमको वैंडरवाल कांस्टेंट A एंड B पता है, A एंड B आर वैंडरवाल कांस्टेंट्स, राइट? अगर उसका A एंड B वैल्यू पता है तो हम लोग उसका VC, PC और TC कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, क्योंकि पता चल जाएगा कि ये गैस अगर इस टेम्परेचर पे है तो क्या ये क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है या क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है, राइट? बेस्ड ऑन दैट ओनली इट्स प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। अब देखो, टिपिकली आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि फाइंड द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैसेस एट क्रिटिकल पैरामीटर्स। ओके, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है बेटा? Z, और हम लोग को कैलकुलेट करना है क्रिटिकल पैरामीटर्स के पास। सो वी कैन राइट दैट एज PCVC बाई NRTC। अच्छा, क्रिटिकल पैरामीटर्स के पास हम लोग हमेशा n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, बिकॉज वॉल्यूम डिफाइन ही किया है हमने 1 मोल के लिए, और इसके वैल्यूज ऑलरेडी हमको पता है। PC, VC, TC क्या होता है? चलो देखो, अभी ZC क्या होगा? प्रेशर इज A by 27B square into 3 times of B, this whole divided by R into TC। TC कितना है? 8A by 27RB, है ना? अब देखो, एक एक टर्म को ध्यान से देखते जाओ। यहां से R और R कैंसिल हो गए, ठीक है, R और कैंसिल हो गया, और यहाँ पर एक B और B कैंसिल हो गया, राइट? और बाकी सब टर्म्स को मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ। सो 8 इंटू 3, सॉरी A इंटू 3 डिवाइडेड बाई 27B इंटू 8A, और बाकी सब टर्म ऊपर आ जाएगा 27 इंटू B। अब देखो, फिर से कैंसिल करते हैं यहाँ पे चीजें। 27 कैंसिल हो गया, B और B कैंसिल हो गया, A और A कैंसिल हो गया। सो इफ यू लुक एट इट, व्हाट इज लेफ्ट बेटा? 3/8। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है नीट में, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z एट क्रिटिकल पैरामीटर्स। तो आसान है ना? अगर वैल्यू याद नहीं है, 3/8 आता है आंसर। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूलाज यूज करोगे और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C। कैन यू ऑब्जर्व वन थिंग बेटा? Z C का वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है, और हमने क्या लर्न किया बेटा? व्हेन Z इज लेस देन 1 मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं ना। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, attractive forces are dominant. Clear? So I hope all of you understood that. So when Z is less than 1, attractive forces are dominant. At what here? This is also at critical parameters. तो critical parameters के पास attractive forces dominate हो रहे हैं। Please make a note everybody. लिख लो सब लोग, important है ये एग्जाम के लिए।
Done? Everybody? Yes, sir. No or yes? Yes. Done, sir. Done. Okay. Now listen. There are few applications before solving the questions. Okay. So हम लोग questions भी सारे solve करेंगे आज. And there are few applications which we must know. Let us see. Applications. First, density and vapor density. ये terms समझना जरूरी. Density and vapor density. We know that for an ideal gas, PV is equal to nRT. ये हो गया ideal gas के लिए, right? अब इसमें आप चेक करोगे that pressure can be written as N by V into RT, right? अब ये देखना बेटा, number of moles को हम लोग लिख सकते हैं weight by molar mass. So if I just replace that value here, so P is equal to weight by molar mass into volume, right? That multiplied by R into T. ये आ जाएगा. Can you see one thing? Weight by volume. Weight by volume क्या होता है बेटा? Density ना? हाँ सर. So we get this as density of the gas multiplied by RT divided by molar mass M. So we will get this equation as PM is equal to DRT. इसका मतलब आइडियल गैस को हम लोग दोनों तरीके से लिख सकते हैं. PV is equal to nRT भी लिख सकते हैं and PV is equal to DRT भी लिख सकते हैं. Clear? Depending upon what is given in the question. अगर question में density, molar mass इनसे related दिया है तो we use PM is equal to DRT. Volume, number of moles दिया है तो we use PV is equal to nRT. Okay. Next. Now if you come across this, we have one more important definition known as vapor density. Vapor density, which is written as VD, is the relative molar mass of a gas with respect to hydrogen gas. With respect to hydrogen gas, उसका molar mass कितना है? इसको हम लोग कहेंगे vapor density. So you can see vapor density of a gas will be equal to molar mass of a gas, M gas divided by 2, because molar mass of hydrogen is 2. तो ये formulas याद करें. So ये दोनों formulas भी आपको याद होने चाहिए, and this is a part of an application. Everybody make a note. Shraddha, I'll discuss beta. Now let me finish this and then I'll discuss all the questions. Write down applications and make a note of these two. Sir, Alisha. sir, can a gas be converted into solid without getting converted into liquid? Yes, beta. That is called like gas is getting converted into, sorry, solid is getting converted into is sublimation. Okay, correct. And gas is getting converted into solid. Correct. That has a word. 1 minute. That is called deposition. It is called deposition. Sublimation का opposite होता है वो deposition. Correct. So there are Yes. certain gases which can be directly converted into solids. इनफैक्ट आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे ना, उसका लिक्विड फेज बहुत ही छोटे टेम्परेचर पे होता है. करेक्ट. सो फॉर कार्बन डाइऑक्साइड द लिक्विड टेम्परेचर इज वेरी लेस. मतलब लिक्विड में एग्जिस्ट करने वाला टेम्परेचर बहुत कम है. इट विल कंप्लीटली गेट इनटू सॉलिड फॉर्म और अ गैस फॉर्म. सेम इज द केस विद आयोडीन. आयोडीन में लिक्विड में ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, या तो वो कंप्लीटली सॉलिड में होगा या तो गैस में होगा. लाइक वाटर का लिक्विड का टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा है वाटर का, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं. वी ऑलवेज सी ड्राई आइस ना, वी डू नॉट सी इट्स लिक्विड.
So I hope all of you got that. Yes, sir. Yes. Next, second application, right, is about the volume of gas particles. See, normally what we have learned, beta, that according to real gas equation, P plus A n square by V square into V minus NB is equal to nRT. ये है वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन, है ना. एंड आई टोल्ड यू ये जो B है ना बेटा, ये B रिप्रेजेंट करता है और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द पार्टिकल्स, है ना, साइज ऑफ पार्टिकल्स. क्लियर. तो ये एक्चुअली में वैल्यू कितना होता है ये कभी कभी आपको पूछ सकते हैं. ये एक एप्लीकेशन पॉइंट है. So you can say, we can find out that this will be 4 times the volume of one particle, 4 times volume of one particle into Na, Avogadro's number. So 1 mole of molecules के लिए कितना volume occupy करता है into 4 times, that is the value of B. ठीक है. So that is 4 times 4 by 3 pi r cube into Na. ये होता है वैन डर वाल्स कांस्टेंट B का वैल्यू. क्लियर. सो कभी कभी ये पूछ सकता है आपको कि B और R को रिलेट करके बताओ. ठीक है. सो अगर दो B वैल्यूज, दो गैसेस के B वैल्यूज को आप कंपेयर कर रहे हो, सो व्हाट वी कैन डू, B1 by B2 which are the ratios of two different van der Waal constant of gases, two different gases के लिए, we can write that as R1 by R2 whole raised to power of whole power q. ठीक है. So this is the second application where B is being asked. अच्छा, B के काफी सारे नाम हैं. It is called as controlled volume. Sometimes we use it as control volume. Sometimes we use it as co-volume. So these are all the terms used, co-volume or controlled volume. Clear, beta? So learn the second application. So sometimes an information of B is asked, तो आपको clear होना चाहिए. Make a note, everybody. Any doubt there? No, sir. Nish, shall we go ahead? Sir, हाँ बेटा. sir, B is a constant, so why it is changing for different gases? B is a constant for a gas. A and B are constants of one particular gas. Okay. Graphical representation. Graphical representation. Yesterday we learned about Maxwell's Boltzmann's curve. Boltzmann's curves. So what we learned there, that we can plot a graph between fraction of particles. ये learn किया था ना? We can draw a graph between fraction of particles and speed. Correct. And we learned that कि यहाँ पर एक dome आता है ऐसे, है ना? ऐसे dome बनता है. And we learned that there are various speeds which are defined. This speed याद आ रहा है? इसको क्या कहते हैं बेटा?
Most probable speed. Most probable speed. Very good. And then we get to second one. That one is, Average speed. so this is average speed. And then we have the third one, which Root we define means it as root mean square speed. So this is VRMS. Yeah, correct. But this was defined at a particular temperature ना बेटा. This is only at one particular temperature. ये भी एक isotherm जैसा है, which is plotted at constant temperature. What if the temperature is changed? If we have different temperature, then how does the graph look like? Let us see that. So if it is being plotted at different temperatures, then how does it look like? Let's see. Let's say this is a temperature T1. ठीक है. अब आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ना बेटा, ये ग्राफ थोड़ा ऐसे हो जाएगा. और भी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये ग्राफ और थोड़ा ऐसे हो जाएगा. मतलब इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर यूनिफॉर्म. ठीक है. पीक का वैल्यू कम होते जा रहा है और टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है. तो आप देखो ये ऑलमोस्ट लीनियर होने की तरह, लीनियर की तरफ बढ़ते जा रहा है. क्लियर? Which means if you see the temperature, T3 is greater than T2 is greater than T1. Whenever you see this graph for fraction of particles versus speed, हमेशा याद रखना that as the temperature increases, ठीक है, हमेशा आपका ग्राफ more and more flatter होते जाएगा. Less bell curve and more flatter. So ये application directly पूछ सकते हैं एग्जाम. What show the graphs when it is increased temperature. ठीक है. So make a note of it. The second graph is about Z versus P. क्लास स्टूडेंट मेन प्रोग्राम जॉईन होती प्लीज आणि त्याच्यानंतर ना वी हॅव टू हॅव Yesterday, we also discussed the fact that for different gases like this, how the Z versus P graph changes. You know? This is the second thing. Again, this was at a constant temperature, isn't it? एक particular temperature पे ये सारे gases कैसे vary हो रहे हैं. This is what we have learned at constant temperature. What if there is a graph to be plotted for different temperature for a same gas? तब कैसे होगा? So if it is been asked, plot Z versus P for only one gas at different temperatures. So in that case, let's say if this is Z is equal to 1 graph, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे वेरी होगा 1 2, राइट, इस तरह से वेरी होगा 1 2 एंड इस तरह से वेरी होगा ऐसे ऐसे, फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, ऐसे जाते रहेगा. एंड दीज आर ऑल एट टेम्परेचर T1 T2 T3 T4 T5. अब ये जो टेम्परेचर है ना, इसको कहते हैं TB. TB, okay, this temperature is called TB. ठीक है. This is all for one gas only बेटा. ये multiple gases के लिए नहीं है, एक ही गैस के लिए different temperatures. और टेम्परेचर का डिपेंडेंसी कैसे होगा इधर? T1 is greater than T2 is greater than TB is greater than TC, T3 greater than T4 greater than T5 T6 वगैरह हो गया. इस तरह से जा. Okay. And now what is this TB? TB here is called Boyle's temperature. It is called Boyle's temperature. Okay. This is a temperature at which real gas behaves like ideal gas. Behaves like
ideal gas at moderate pressures. At moderate pressures. High pressure पे ये valid नहीं है. It is only valid up to moderate pressures. ध्यान से देखना इसको. You can see that Z is almost equal to 1 up to this point ना. ये पूरा moderate range ही तो है. इतना pressure moderate है. So in that moderate range of pressure, can you see Z values becoming almost equal to 1? That's why I said the temperature at which the real gas is behaving like an ideal gas at a moderate pressure, correct? That is called as Boyle's temperature. Mathematically, Boyle's temperature is calculated as A by RB. That's ये उसका formula है. So this is another application. Sometimes it is directly asked, calculate Boyle's temperature given A and B. So students, ये note कर लो तीनों graphical application. Now those who have booklets will open up the booklets first. Finish with it. Sir, 1 minute. Ayush, any doubts here? No, sir. Those who finished, get to page number 98. There we have test your knowledge 1. So we'll do quickly questions very quickly now. Check. एकदम फास्ट करना आना चाहिए बेटा. इसमें सारे simple theoretical questions है. ठीक है? So I'm hoping that all of you know it. So let's see the first one. Which one of the following statement is not correct about the 3 states of matter, that is solid, liquid and gases? Okay. Sir, option 3. Option Option- 3. Correct. Gases like liquids do not possess definite volumes is an incorrect statement. The temperature 25 degrees can be expressed in Fahrenheit as. Okay. So second question, test your knowledge 1. Test your knowledge 1. First one. We learned that temperature in degree centigrade can be written as, degree Fahrenheit can be written as 9 by 5 times of temperature, 9 by times temperature in degree centigrade plus 32. So it is 9 by 5 into temperature in degree centigrade is 25 plus 32 given. Okay, so this goes 5 times, right? This goes 5 times, so we'll get this as 9 5s are 45 plus 32. So how much we are getting, beta? 79 F. Clear? Sorry, 77 F.
So 77. Right. So what is the answer here? 3. 77, 3. Next option, next question 3. Which of the following is true about the gases? Okay. Sir, option 2, B. Option 2 correct. I Yes, told sir. you देखो प्लाज्मा स्टेट होता है, फिर गैसियस स्टेट, फिर लिक्विड, सॉलिड एंड Composite BEC, correct? And remember this has the highest energy, मतलब thermal energy. Thermal energy very high compared to gases, compared to liquids, compared to solids and compared to Bose-Einstein condensates. ठीक है? So if you compare only gas, liquid and solid, so किसका thermal energy ज्यादा होगा? Gases का. And molecular interactions या attractions, molecular attractions exactly opposite. इसका सबसे least, फिर इसका, then इसका, BEC का सबसे ज्यादा highest, होगा. सबसे BEC का. Okay. So the answer here is 2. Next. Question 4. Kinetic energy of the molecules is highest in which one? Sir, gases. 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 Which of the following? Yeah. Which of the following is a correct statement? In all 3 states, the molecule possesses random translational motion. Is it true? No. Everybody? No. Gases cannot be converted into solids without passing through liquid state. Is that true, No, sir. guys? No. No. A volume देखो, a volume of one of the common properties of liquid gases is viscosity. Is that correct? Yes. So that is a correct statement. According Sir, to what's the viscosity? what is viscosity? That is our next topic actually, liquid state. I'll just give you a brief idea here. So viscosity is normally represented by eta. Okay. Viscosity is a viscosity इसको कहते हैं viscosity coefficient. Viscosity क्या है कि सपोज आपने वाटर लिया है और ये एक सरफेस है, इमेजिन करो ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर आपने वाटर डाला है एंड यू आर लेटिंग द वाटर फ्लो. तो वाटर कैसे फ्लो होगा पता है बेटा? पहले का ऊपर का लेयर ऐसे जाएगा, नेक्स्ट लेयर थोड़ा सा कम जाएगा, उसके बाद का लेयर कम जाएगा, फिर कम जाएगा, ऐसे, राइट? So what is happening here? So the lowest layer will have some friction with the ground. Lowest layer will have the friction with the ground, but the surface layer will not have any friction. वो ऐसे चला जाएगा. Got it? इसका मतलब क्या हो रहा है? वाटर में एक ड्रैग है ना, नीचे पानी को बेस जो है फ्रिक्शन की वजह से उसको खींच रहा है. उसके ऊपर एक लेयर है, वो फर्स्ट लेयर ऊपर वाले लेयर को थोड़ा फ्रिक्शन दे रहा है, उसका ऊपर लेयर और थोड़ा फ्रिक्शन दे रहा है, उसका ऊपर लेयर थोड़ा सा फ्रिक्शन दे रहा है. सो सबसे लीस्ट फ्रिक्शन सरफेस पे होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन होगा, नेक्स्ट वाले पे ज्यादा फ्रिक्शन होगा. इसलिए आप जैसे पानी डालते हो, ग्राउंड पे पानी डालते हो तो वो चिपकने लगेगा ना, बिकॉज इट इज गेटिंग attached to the surface because it will have more friction. This ability, right, this ability to have the friction in the solution, friction in the movement is called as viscosity. Okay. Everybody understood that? So it's simple. ऐसे सोचो, वाटर है और जूस है, किसमें विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा? कोई भी जूस लेंगे, सो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा. सो अब पेस्ट फॉर एग्जांपल, पेस्ट में डेंसिटी, पेस्ट का डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होता है ना, टूथपेस्ट का. सो उसमें विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा होगा. Now coming to this question, it said one of the common properties of liquid and gases is viscosity. That is a correct statement. According to Boyle's law, V by P is constant. V by P is constant at constant temperature. Is that true? No, right? sir. Correct. PV is equal to constant होता है, V by P नहीं होता. So इसमें correct statement कौन सा है बेटा? Only 3. Okay. Now you will ask me, sir, what about the first and second? In 3 states, the molecule possesses random translational motion. Okay. क्या solid में molecules move नहीं कर रहे? कर रहे हैं. Solid में move कर रहे हैं ना? Correct? हाँ, Right? ऐसे So वाइब्रेट कर.
हाँ, सो ये करेक्ट नहीं होना चाहिए क्या? इन 3 मॉलिक्यूल्स पोजेस रैंडम ट्रांसलेशनल मोशन। देखो, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है एक पार्टिकल एक एक्स वाई जेड पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है। क्या सॉलिड में मूव कर रहा है? सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है अपने मेन पोजीशन पे, करेक्ट? सो बट क्या वो रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह तक जा पा रहा है? नहीं ना। No, sir. So that is why this statement is incorrect. Second, gases cannot be converted into liquids without passing through liquid state. इससे पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली सॉलिड होता है, सॉरी गैस होता है, उसको कंप्रेस करने पर लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए, then it has to go to solid state. But there are many molecules whose liquid temperature, the temperature at which they can exist liquid is very 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 less. So in that case that is hardly known. So वो immediately solid से liquid से gas से सीधा solid में convert होते दिखेगा. Another example, there are a lot of gases which get settled down on the surface of the metal. Okay, सरफेस ऑफ द मेटल होता है, कोई भी निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इन सब सरफेस ऑफ मेटल्स पे गैसेस स्टोर हो जाते हैं। इसको कहते हैं ऑक्यूलेशन, डिपोजिशन और ऑक्यूलेशन। सो व्हेन देयर इज अ डिपोजिशन और ऑक्यूलेशन, व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट डायरेक्टली गैस इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग इनटू लिक्विड जोन एट ऑल। सो ऐसे काफी सारे गैसेस होते हैं which can directly convert into solids without converting into liquids first. So therefore this statement is also incorrect. I think all of you understood that, right? I am expecting that 6th, 7th, 8th has no problem with anybody, right? As well as 9th and 10th, correct? Anyone has any issue there? No. Now let us come to test 2. Test your knowledge 2. Here, first one, a constant temperature in a given mass of an ideal gas. Okay, the ratio of pressure and volume always remain constant. See, the ratio of pressure and volume always remain constant. Volume always remain constant. Pressure always remain constant. The product of pressure and volume remains constant. Which is correct, beta? Everybody? So T, Y, K, right? So which one? Second? No, first question. This is T, Y, K Sir, second. 4, correct. Option So B. we learned Boyle's law is PV is equal to constant, no? ये Boyle's law होता है. So answer should be 4. Second one. At sea level, air at sea level is dense. This is practical application of what? Boyle's law. Boyle's law. Why? सर क्योंकि P is inversely proportional to A ना, तो more is the Correct. pressure at the sea level, though less is the volume, so more is the density. More is the density. Very good. So what is that one? Others understood? You just count based on the pressure. More pressure, less volume. Less volume, more density. Which of the following statement is false? The product of pressure and volume of fixed amount is independent of temperature. Molecules of different gases have the same kinetic energy at given temperature. The gas equation is not valid at high pressure and low temperature. Okay. The gas constant per molecule is known as Boltzmann's constant. Which is false, beta? Sir, option A. Option A. Yeah, option A तो correct है ना बेटा? PV is equal to constant. It is independent of T, Temperature. है ना? Correct. So that is correct only, ना? So option A is correct, Option C. right? So option B भी correct है. देखो option B क्यों correct है? Kinetic energy of a particle is equal to 3/2 kT ना? It only depends upon temperature. Molar mass पे depend कर रहा है? नहीं ना? आप कोई भी मोलार मास लो, काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3/2 kT. मतलब हर गैस के लिए सेम टेम्परेचर पे सेम काइनेटिक एनर्जी. सो बी इज आल्सो करेक्ट. सी, द गैस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. देखो
अगर प्रेशर हाई है, टेम्परेचर लो है, तो PV इज इक्वल टू nRT वैलिड नहीं होगा ना। क्यों वैलिड नहीं होगा? क्योंकि प्रेशर हाई है तो पार्टिकल्स काफी क्लोज आ जाएंगे, और टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, तो वो रियल गैसेस की तरह बिहेव करेंगे। सो PV इज इक्वल टू nRT इज नॉट वैलिड, सो C इज आल्सो करेक्ट। D, gas constant per molecule. Now, gas constant R divided by per Avogadro number, that is defined as Boltzmann's constant, no? So which is incorrect here? D. D is incorrect. So I think ये clear है सबको. Third question. Next. Fourth one. Density of two gases, temperatures are given. Density of pressures is how much? Okay. देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग साथ में देखेंगे, साथ में करेंगे, साथ में करो। अभी मैंने एक डिराइव किया आपको, PM इज इक्वल टू DRT, है ना? PM इज इक्वल टू DRT. Let us assume two gases here. So PA MA is equal to DA RTA, है ना? And PB MB is equal to DB RTB. ये हो जाएगा, right? And density of two gases are in the ratio of 1:2, and their temperatures are in the ratio of 2:1, and the ratio of the respective pressures will be how much? Okay, यहाँ पर सिर्फ एक information missing है ब्रैकेट में, that it forgot to tell us that MA is equal to MB. वहां पर प्लीज आप मेंशन कर लें, MA is equal to MB होना चाहिए। So in that case what we can say beta, PA MA divided by DA TA should be equal to PB MB divided by DB into TB, है ना? So you can see that MA and MB are same, so that will get cancelled. So now our question is about PA by PB. That is what we need to figure out. So DA by DB into TA by TB, ये हो जाएगा। So now look at it, DA by DB given है ना, density of two gases is given as 1/2, temperature is given as 2/1, तो pressure का ratio कितना हो जाएगा? 1:1. So what should be the answer? 1. Make a note everybody. क्या बेटा? थर्ड क्वेश्चन है ना, हाँ, उसके पहले ऑप्शन का उसके पीछे का पेज है, वहाँ पे बॉयज लोग यहाँ क्या है, PV is equal to constant. This constant will depend on amount of the gas and the temperature of the gas. On page number 99, below boys law, they have given that it depends on temperature of the gas. page number 99. Okay, Boyle's at law, constant mass and temperature, density of a gas is directly proportional to pressure and inversely proportional to its volume. This is what you're saying, right? This Yes. constant will be dependent on the amount of gas and the temperature of the gas. Correct. Now come to this question. What he said is that the product of pressure and volume of a fixed amount of a gas is independent of temperature. Okay. At independent of temperature, fixed amount of a gas. Oh, he didn't say constant temperature. All right. So you should have used as constant temperature. Fixed amount of a gas is independent of temperature. So just change the wording there, beta. Put that as constant temperature. That should have been correct. Okay. So do one thing. Take option 1 and 4 both as correct, everybody. So she's right that question number 3, everybody, make option 1 and 4, both of them as incorrect statements, which means वो false statement है. So 1 and 4 दोनों correct होना चाहिए. Right. Next, look at this question here. Fifth one, I think all of you can easily figure out that it is absolute temperature. अच्छा, केल्विन को कहते हैं हमेशा absolute temperature. Okay. Next, sixth one.
use of hot balloons in sports and meteorological observation is what? Okay, बताओ, use of hot balloon कहाँ पे use करते हैं हम लोग? देखो, hot balloon का आइडिया होता है कांस्टेंट प्रेशर का, करेक्ट? अपने हॉट बैलून के बारे में सुना है एवरीबॉडी? जो बैलून्स, चार्ल्स लो। हाँ, बैलून्स के ऊपर बैठ के लोग जाते हैं, राइट? सो देयर व्हाट वी आर अप्लाइंग चार्ल्स लॉ। कांस्टेंट प्रेशर है, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ रहा है उस बैलून के अंदर, ठीक है? एंड दैट इज अ फिनोमेना ऑन व्हिच इट गोस। सो व्हाट इज दैट फिनोमेना हियर? चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट, 10th 7th one, look at 7th one now. What is that given? At 10 grams of atmospheric pressure is cooled from of a gas at atmospheric pressure is cooled at this to this, its pressure would become, 7th karo, 7th says that P1 V1 by T1 should be equal to P2 V2 by T2, because here it is of the same gas, so number of moles same है, तो आपको सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट? 10 grams of a gas at this is cooled from 273 to 0 degrees, keeping the volume constant. अच्छा, इसमें वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है P2 is equal to P1 into T2 by T1, right? So P2 is given as atmospheric pressure. अच्छा, atmospheric pressure 1 atm होता है into T2 is 0 degrees, 0 degrees मतलब 273 होता है, and T1 is 273 kelvins, 273 मतलब डबल 273 प्लस 273 ना, हम लोग को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट, केल्विन में कन्वर्ट करना है, so 2 times of 273, so 273 will get cancelled, so what do we have? 0.5 atm. Clear everybody? अच्छा, T2 by T1 है, हाँ बराबर है, T1 to T2. Clear everyone? किसी को कोई डाउट है इसमें? No. Next, pressure containing the pressure remaining the same, the volume of a given mass of an ideal gas increases from every degree centigrade rise in temperature by definite fraction of its volume at what? Okay, check and tell me the answer everybody. क्या होना चाहिए? See what is happening here. The pressure remaining the same, the volume of a given mass of ideal gas increases by every degree centigrade rise in temperature by definite fraction of its volume at. What does that mean? See, if V1 and V2 लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये अगर मैं 0 डिग्रीज लूंगा, राइट, एट टेम्परेचर T1 temperature, and this I'll take it as V2 and this is temperature T2. Clear? Now tell me if it is changed to 1 degree, अगर ये 1 degree चेंज हो जाता है टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताओ वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है? ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, 1 डिग्री चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम कितना चेंज होना चाहिए? देखो, सो वी नो दैट V2 by V1 शुड बी इक्वल टू T2 by T1, ये हमने लर्न किया चार्ल्स लॉ से. So I can say V2 is equal to V1 into T2 by T1 ना. So V1 into T2 कितना है बेटा? 1 डिग्री. 1 डिग्री मतलब कितना होता है? 273 प्लस 1 डिग्री है ना, प्लस 1. केल्विन स्केल में यही होता है, और 273 ये हो जाता है इसमें. So what we can say, it is V1 into 1 plus 1 by 273 बराबर. So you can see that V1 plus V1 by 273, इतना फ्रैक्शन बढ़ रहा है ना हर बार, इतना फ्रैक्शन बढ़ रहा है into V1, correct? Everybody understood that? So therefore V2 I can write it as V1 plus 1 by 273 into V1 for every 1 degree rise in temperature. So whenever there is 1 degree rise in temperature, students, तो कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा? 1 by 273 डिग्री वॉल्यूम बढ़ जाएगा. Okay, so the question asked is, this is possible when you define it as 0 degree centigrade, correct? So मैंने ये
देखो 0 डिग्री से लिया ना, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वहां से 1 डिग्री बढ़ रहा है, so we will get this fraction increase. So the answer should be 0 degrees. Make a note. This is question number 8. Next 9. A certain gas sample has a volume 0.2 measured at 1 atm. It is measured at 1 atm pressure. But at the same pressure, its volume will be how much? Okay. Finish everybody. Certain sample of gas has a volume 0.2 liters measured at 1 atm pressure. Okay. But at the same pressure, its volume will be. Okay. So there is a confusion in that question. वो आप please निकाल दीजिए क्योंकि some data is missing up there. See the next one, 10th one. 400 ml of oxygen at 127 degrees was cooled to 27 degrees without change in pressure. The contraction in volumes. I want all of you to try that. 10th one. 10th one is pretty simple, so I think all of you should get that. यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है ना बेटा, विदाउट चेंजिंग प्रेशर. तो क्या लॉ लगाएंगे हम लोग यहाँ पर? एवरीवन? Charles law. Charles law. We just need to apply Charles law. So Charles law tells us that V2 by V1 is equal to T2 by T1. So we need to find out first V2. So V2 is equal to V1 into T2 by T1. So V1 is given 400 ml. Into T2 is given, it is cooled to 27. 27 matlab 300 and 127. 127 matlab 400. Correct? So this is how much? 300 ml. Correct? So V2 is 300 ml. Correct? So the volume term will get cancelled. I mean, sorry, 0, 0 will get cancelled. 4 will get cancelled there. So volume is 300 ml. So what is the change in volume then? Right? So V1 minus V2 is 100 ml. That is what he changed, right? That is what is asked. How much volume will be contracted? So 100 ml. Clear, everyone? Yes, sir. To this test 3, test your knowledge 3. Let us see the first one. The ratio of root mean square velocity to average velocity of a gas at a particular temperature is how much? Right. फॉर्मूला सब फॉर्मूला बेस्ड है, ये सारे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं केटीजी के. और बेस्ट पार्ट यही है कि ये फिजिक्स में भी सेम क्वेश्चंस होते हैं. इफ यू प्रिपेयर फॉर वंस, फिजिक्स में काफी इजी होगा आपको सॉल्व करने के लिए. एंड दोनों जगह में क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा. सो इट इज अ डबल स्कोरिंग. सो लर्न इट. रूट मीन स्क्वायर. सो URMS विल बी अंडर रूट ऑफ 3RT by m. ये लर्न किया हमने. एंड U average we learned it as 8RT by pi m. So what we learned, for a same gas at a particular temperature, same temperature पे ratio कितना होगा? So URMS divided by U average, so is equal to under root of 3RT by m, right, multiplied by under root of pi m divided by 8RT. So m cancel हो जाएगा, root cancel हो जाएगा, TT cancel हो जाएगा, RR cancel हो जाएगा. So all we left out here. Sorry, root मतलब root के अंदर रहेगा सब कुछ. Root के अंदर रहेगा 3 pi by 8. ये हो जाएगा. So it will just be 3 pi by 8. Right. So let me show you. So 3 into 3.14 divided by 8. So 1.8.
177. So root of 1.177. So that is coming out to be 1.08. Correct? So 1.086 is to 1. So what is the answer there, beta? 1. So note करो उसको. Tell me about the second one. Second question. किसी को डाउट है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में? Should we go ahead? Right. See. Which is not true in case of ideal gas. It cannot be converted into liquid, which is true, right? There is no potential energy. Ideal gas का हमने सबसे पहला assumption क्या लिया था? Potential energy is 0. मतलब वो liquid में convert हो ही नहीं सकता. So which is a correct statement. Yes. There is no interactions between the molecules. That is also correct statement. All molecules of the gas move with the same speed. No, that is not a correct statement. At a given temperature, PV is proportional to the amount of gas. That is correct or no? That is correct. So PV is equal to nRT होता है. अगर temperature constant है, तो PV will be proportional to N. N. That statement is also correct. So which is incorrect here? Third one. Third one. So third statement is incorrect. Here everybody. Next. Which of the following has maximum root mean square speed of the at same temperature? अच्छा. Root mean square क्या होता है? Root mean square RMS. So URMS, right, will be equal to under root of 3RT by M होता है, which is, sorry, yeah. So U is inversely proportional to root M, ना? U is inversely proportional to root M, बराबर? In this, if you look at it, if the M value is changed, guys, can you hear me? Yeah, sorry guys, 1 minute. Like- Lost the power here. Yeah, I think all of you are able to see that. Yes, sir. Right, look at it. The next question is about URMS. U is inversely proportional to molar mass. You know that, right? तो अभी आप चेक करो. If you check out the molar mass, जिसका molar mass ज़्यादा रहेगा, that would have the lowest U value, है ना? That is RMS value. So we have 4 options here: sulfur dioxide, carbon dioxide, O2, and H2. Molar mass is 64, 44, and 32, and 2. So which has the, he said maximum root value. So minimum molar mass, maximum URMS, correct? So what should be the answer there? 4. I think all of you got there. बेटा इतना ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको प्लीज ध्यान से सिर्फ फॉर्मूला चेक करना है, उसमें चेक करो कि मोलर मास कंपेयर करना है, एंड यू विल बी डन. इट्स सिंपल इट इज. See the fourth one. The temperature at which the RMS speed of molecules is half the helium. ये क्लास में किया था हमने, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन. So let's see now. So temperature at which RMS speed is half that of helium molecules at 300 kelvins. So URMS of one particular, मैं इसको U1 लेता हूँ बेटा. U1 is equal to under root of 3RT divided by the temperature at which RMS molecules is half that of
velocity of molecules is half that of helium molecules. So this 3 RT by m, if you compare that with helium, correct? This is given as helium का कितना होता है बेटा? 3 RT by m. M is 4 for helium. Okay. And U helium is given as the temperature at which RMS velocity of molecules is half that of helium. So U helium is 2 times that of U1. Right. So we can say that under root of 3 RT and T kitna given hai? T given is 300. So it is given as 300 divided by M is equal to under root of 3 R into T, 2 times of 3 R into T divided by M. Now he hasn't mentioned whether it is any different gas. So we'll always take the same helium gas. So with the same helium gas, if you take that, this root and root, आप square करोगे तो root चला जाएगा and 2 will become 4. So 3R into 300 is equal to 4 times of 3R into T. Correct? So again 3R will get cancelled. So we will have temperature is equal to 300 divided by 4. Correct? So 300 divided by 4. So what did we get from here now? So we are getting this as 300 divided by T. 1 second, let me check. The temperature at which the RMS molecules is half that of this. So 3 square 4 3 RT by T. 3 got cancelled. 3%. So temperature is coming out to be only this goes 7 times 20, 75. 75 kelvins is what we're getting. Okay. So यहाँ पे कुछ data गड़बड़ दिया बेटा. Please check that. Here we are supposed to get, because based on RMS it has to be root 3 RT by M. Yeah. So if you square on both sides, this will get cancelled, and this 2 will become 4 times here, and we need to find the temperature, which is coming out to be 300 by 4. So this is the temperature at which you have to maintain. Okay. Either the question should have been instead of giving it as half, it should have been twice. Let us see that. Options. Fourth one. 150 is given. Half of it. So that is given wrong, beta. Please change the answer to 75, everyone. Right. Next. Look at this. Please इसको note कर लो, fourth वाला, और वहाँ पे option में 150 है ना, उसको change कर दो 75. Next, root mean square of a gas molecule is proportional to, right? Root mean square is proportional to what? Okay. So U is proportional to under root of T by M. ये है ना? Correct? And if you see in terms of proportionality, meters में है या कैसा है, आप क्या देखोगे? See, since it is a speed will always be equal to meters per second ना बेटा, correct? आप जो भी कैलकुलेट करो अंदर, वो रूट में से मीटर स्क्वायर आएगा और उसका रूट निकालोगे तो मीटर आ जाएगा. मीटर आना ही चाहिए because it is speed, isn't it? So root mean square velocity velocity of a gas is proportional to meters. Okay. Next, sixth one, at constant volume for a fixed number of moles of a gas, the pressure of a gas increases with increase in temperature. Okay. So if we see the sixth one, it says that pressure of the gas is increasing with temperature. अच्छा ये क्या हो रहा है? We know that constant volume is which law? Constant volume means कौन सा law है बेटा?
Gay-Lussac's law. Yes, sir. Right. So this is Gay-Lussac's law. So pressure is directly proportional to temperature. Clear? So now let us see what is happening here. Increase in the average molecular speed and increase in the rate of collisions among the molecules here. Got it? Yeah. Increase in the average molecular speed, increase the rate of collision among temperature, increase in molecular attraction, decrease in molecular mean free path. देखो mean free path and collisions ये सारे आप फिजिक्स में पढ़ोगे, यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है, so don't worry about it. But the option is not about that. See, one thing we know that if temperature is increased, kinetic energy will be increased for ideal gas, है ना? And if kinetic energy is increased, speed will increase, isn't it? Kinetic energy increase होगा तो speed बढ़ जाएगा ना? That is exactly what we need to check here. That's it. So here the question is increase the average molecular speed. Molecular speed बढ़ रहा है ना? So the option should be 1. Students, I hope you understood that. Right? So take that. Yes. See the 7th one. The ratio between the root mean square of H2 at 50 kelvins and O2 at 800 kelvins is how much? Okay. Ratio between root mean square RMS URMS of H2, here root mean square of H2 at temperature 50 kelvins versus URMS of O2 800 kelvins kitna ho, right? Let us see. URMS of H2 will be equal to under root of 3RT by M of H2 hota hai, and URMS of O2 will be equal to under root of 3RT by M of O2 होगा. इन दोनों का रेशियो लेते हैं, U of H2 divided by U of O2. So that will give us under root of 3R, यहाँ पे टेम्परेचर है 50 divided by molar mass is 2 into under root of, ये molar mass ऊपर आ जाएगा which is 32 divided by 3R into T. So this T is 800. Got it? So this 3R will get cancelled, and in the root what do we have? We have 50 into 32 divided by 2 into 800. So this goes 16 times, correct? So 5 goes 1 time here, and 5 goes how many times here, beta? This goes 1 time and 30, 60, correct? So ये 16 cancel हो गया, तो कितना आ रहा है? 1. So 1:1. So what is the ratio we are getting, beta? We are getting ratio as 1:1 or 1, which is option C. Please make a note, everybody. Right. See the 7th. See the 8th one now. Consider a mixture of SO2 and O2 kept at room temperature. Compared to that of oxygen molecule, the molecule will hit the wall with. Okay. Consider a mixture of SO2 and O2 kept at room temperature. Compared to oxygen molecule, the molecule will hit the wall with. Which one will hit the molecule? SO2 will hit with same speed, greater speed or less speed, beta? If temperature same है, so it only depends upon molar mass, na? So any speed will be dependent on under root of T by M. By M. So
So it only depends upon the molar mass. Temperature same है. So molar mass जिसका ज़्यादा रहेगा, speed उसका कम रहेगा. So what should be the answer? It will have smaller average speed. Next. But what about the kinetic energy, students? Kinetic energy will be same because kinetic energy only depends on temperature. वो ध्यान रखना. Ninth one. The RMS speed of the molecule in a gas is RMS speed of molecule in a gas is U. If the temperature is double and the nitrogen molecule dissociates into nitrogen atoms, the RMS speed becomes how much? Okay. Right. So you can see that U is equal to, listen up, U is equal to under root of 3RT by M. M is what? M is for nitrogen. Nitrogen molar mass is how much? 28 as a molecule. As a molecule, it is 28. This is equation 1. Okay. And here, what he said, second time, if the temperature is doubled and nitrogen molecules dissociate into nitrogen atoms, now what is the RMS speed? So now the new RMS will be equal to under root of 3R into T. Temperature is doubled. So 2T kar diya hai, divided by, this is 14. Because atomic mass, now it is, because it is a nitrogen atom now. Abhi molecule nahi raha. Nitrogen atom is, atomic mass is 14. So that will be equal to under root of 3RT divided by 14 into 2. ये आ गया. देखो, I would suggest ऊपर और नीचे 2 से multiply और divide कर दो, तो क्या हो जाएगा ये? Can I write this as 3RT, correct? Divided by 28 into 4. ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना? Which is equal to 2 times of 4 को मैंने बाहर निकाला, तो 2 times of 3RT by 28. So from equation 1, what is this value? Under root of 3RT by 28 is nothing but U. So 2 times of U. So what happens to the new value here? It will become 2 times of U. Friends, make a note of that. Anyone got a doubt there? Right, see the 10th question. Ayush, are you following, beta? Yes, sir. Sai? Yes, sir. Alisha? Kabir? Yes, sir. Shraddha? Vaishnavi? Yes, sir. Yes, sir. Right. Right, good. Sir, 1 atmosphere, how will be converted into dynes? Question beta. Okay. 10 raised to power of 7 dynes is 1 joule. Okay. अब हो जाएगा? Yeah, sir. Yeah. The RMS velocity of certain gas is V at 300 kelvins. The temperature at which the RMS velocity becomes double. Okay. So RMS velocity is given as V. Sorry, I'll write it as U RMS is given as V. And temperature is 300 kelvins. What is the temperature at which RMS velocity becomes doubled? So we need to figure out what is the temperature when this will become 2 times. So which means 2 times of V. Clear? So we know that under root of 3RT by M is equal to V, first equation. This is at temperature T1, which is 300 given. Second thing is 3RT by M, which is T2, is given as 2 times of V.
दोनों को डिवाइड कर दो. What do I get? I'll get this. Everything will get cancelled. We'll have under root of T1 by T2 T2 equal to 1 by 2. 1 दोनों को स्क्वायर ले लो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ. You get T1 by T2 is equal to 1 by 4. So T2 is equal to T1 times of 4. So T1 is 300 into 4. So how much is that, beta? 1000. Right. So 1200 kelvins. So the answer should be 1. So make a note, everybody. So in exam you would get up to this point, beta. देखो यहाँ पर kinetic theory of gases बाद में दिया हुआ है, but theory बाद में दिया है, but it is actually part of whatever we have studied is all kinetic theory of gases only. The next questions which are given, test 4, correct? There are only few questions which are of related to KTG, okay? But other than that, so, some of them, no. Here it is given, no, these are all KTG only. But test your knowledge 5, correct? That is all with the van der Waals equation and real gas equation, correct? So I want all of you to do the test 4 also. Finish up the test 4 part, okay? And in case if there are any doubts, you would send me doubts on the WhatsApp. And level 1 questions, let me tell you what all questions you need to do. You see level 1 questions from 1 to 45. 1 to 45, you can do all of them, and all of them are in the syllabus point of view. From exam point of view, up to KTG, it is covering everything except real gases. Everything it has been covered. So try these questions for this coming test. Okay. Nice, students. Chalo. I'll end the session now. If you have any doubts, you can ask me. The test your knowledge 4 only. What, beta? Only test your knowledge 4. Yes, knowledge 4. Okay, guys, I'll end the session then. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, bye. Bye, guys. We'll catch you next week then. Bye.